हेलो हाय अरशद, दिनों बाद, बहुत सालों बाद। दिनों बाद, बहुत सालों बाद। हाय आशीष। बहुत सालों बाद। हाँ, परफेक्ट है, साउंड परफेक्ट है। Sir, I want to organize a IPL like esports tournament. How can IPL like? It's a very costly affair. Gaurang, hello. How are you? I'm doing good. How are you? How are you, sir? Mr. Gamer Rider. Game Rider. Mr. Game Rider. Hi. गेम राइडर, मैंने तेरे मैसेजेस पढ़े हैं और इसीलिए आई एम स्टार्टिंग इट। आई एम स्टार्टिंग बीइंग एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड। मेजरली तो मेरा यूट्यूब लाइव, यूट्यूब के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए थे। सो अभी मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई थिंक धीरे धीरे करके वी विल बी बैक विथ द सेम इंटेंसिटी एंड सेम पेस जिस पेस से हम लोग पहले वीडियो बना रहे थे। अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स एंड आई ऑल्सो राइट नाउ आई ऑल्सो डोंट हैव अ फुल फ्लेजेड वीडियो एडिटर जो मेरी वीडियोस को एडिट कर सके। सो इसके वजह से थोड़ा डिलेज ज़्यादा हो चुके थे। बट अभी आई एम ट्राइंग टू गेट इट बैक। आई एम ट्राइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम पीपल सो दैट आई कैन पुट आउट मोर कंटेंट और ज़्यादा लाइव आओ। I can manage everything, but I need the support from the esports community. Nice. Esports community support के लिए I'm not the right person, honestly. उसके लिए I think you should be active, very active on डिस्कॉर्ड चैनल्स जो esports टूर्नामेंट से रिलेटेड है, या फिर ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, प्रो एथलीट्स, उनके अलग से डिस्कॉर्ड चैनल्स है। आप वहाँ पे इफ़ यू कनेक्ट मोर इन दैट, आई थिंक यू कैन गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम द esports community for that. Yes, thank you.
Thank you for the feedback, Game Rider. When is IGDC going to be announced? IGDC will be announced soon, पर मैं आप लोगों को dates बता देता हूँ. It's in the first week of November itself. Exact क्या dates है वो मैं officially बता नहीं सकता unless IGDC puts it जो official handle से news आएगी. पर अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ कि इट्स ऑन दी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. सो अपना कैलेंडर खाली रखिए बिकॉज दिस ईयर्स IGDC अगेन इज गोइंग टू बी kick-ass. How StoryPix is going, sir? StoryPix is going amazing. Arshad, thank you for asking. StoryPix में अभी फ़िलहाल we've crossed around 250,000 users और content इतना flow हो रहा है. We are putting out lot more stories every month and there's a great response from the community, from the people who are playing it, and I think it's a good validation for us. This is kind of a dumb question, but where exactly does game devs use money on a game? Like you have your own programmers and artists, so where does that money is used? Uditansh, the programmers and artists also take salaries, right? सबसे मेजर चंक जाता है to pay the people that you work with. So तुम्हारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है जो सैलरीज में जाता है वो मेजर चंक होता है. उसके बाद देन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग कॉल्ड एज यूज़र एक्विजिशन. तो बहुत लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो लोग गेम को रिलीज़ करते हैं एंड देन दे थिंक कि मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आएंगे एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू बनेगा. ऐसा नहीं होता. देयर इज अ स्टैंडर्ड वे. देयर इज एफर्ट्स in every aspect of game development as well as once the game is released also. So user acquisition mein basically you need to spend money on getting the right users on your game first. Let them play your game, see their feedback, iterate on your game, and then slowly वो भी जो आप spend कर रहे हो every day on getting users वो भी बढ़ते जाएगा. You'll have to spend more and more money every day to bring the targeted audience that you want on the game. तो यूज़र एक्विजिशन है. देन देयर इज ASO आप ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन आप खुद से भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट ASO के वजह से तुम्हारा गेम रैंक करेगा बाकी सब गेम्स में. अगर किसी को तुम्हारे गेम को ढूंढना होगा तो you need to figure out those keywords, put it in your description and everything so that people can find your game by not just typing the name of your game but also keywords जो तुम डालोगे उसके हिसाब से गेम तुम्हारा रैंकिंग करना चाहिए. So there are a lot of things that you need to spend money on. Few of the examples I've just given you. Like some companies use more than millions of dollars, so where is it used? Like I said, marketing and user acquisitions में बहुत पैसा खर्चा होता है. Like to give you an example, इंडिया में अगर तुम गेम बना रहे हो तो इंडिया के एक यूज़र को बाय करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 5 से 10 रुपए स्पेंड करने होते हैं. तो इमेजिन करो तुम्हें 1 लाख यूज़र्स अगर चाहिए तो तुम्हें आइडियली 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा when you have to bring that kind of user on your game. पर जब तुम 10 लाख खर्चा कर रहे हो तो you also need to make sure कि तुम्हारे गेम में मोनेटाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम उस मोनेटाइजेशन टेक्निक से जहाँ पे तुम 1 लाख यूज़र्स को ला रहे हो इसके लिए तुमने 10 लाख रुपए स्पेंड किए, तुम एटलीस्ट उस यूज़र से 11 लाख रुपए कमाने को ट्राई करो.
that's the typical strategy. That's what everybody does, and that's why hyper casual games really work. Hyper casual में simply ऐसा करते हैं लोग कि they just get one US user for say 30 cents, which is around 28 rupees, 28 to 30 rupees. उसके ऊपर if that one user makes 40 rupees for them, that's done. I mean, they'll just spend money on getting more and more users on that side. इस साल का IGDC पक्का, अगर हेल्थ सही रही तो। तेरे पास अभी 3-4 महीने हेल्थ सही करवा ले मेरे भाई, बिकॉज IGDC इस साल का मिस नहीं होना चाहिए। गाइज, लाइक बटन पे क्लिक कर दो एक बार, बहुत अरसे बाद आया हूँ लाइव। आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग टू put out content as much as I can. I know I can manage, but can you help me to understand the sponsorship process? See, sponsorship is a thing where तुमको सिर्फ जिस कंपनी, जिस ब्रांड से तुम्हें पैसे चाहिए, उसको सिर्फ ये कन्विंस करना है कि उसके ब्रांड का प्रमोशन होगा. If you can do that, you can crack a good sponsorship deal with anybody. Like, just to give you an example, अगर तुम just to give you a simple example, अगर तुम्हें रेड बुल चाहिए और अगर तुम रेड बुल को जाके ये बोल रहे हो कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ जहाँ पे 30 मिनट के पॉडकास्ट में तुम्हारा एक लोगो दिखेगा वहाँ पे उस वीडियो में, एंड हो सकता है तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो यूट्यूब पे, तो तुम ये बोल सकते हो कि ये 30 मिनट्स का वीडियो 1 लाख लोगों तक जाने वाला है. दैट्स हाउ यू विल गेट एक्सपोजर टू माई सेट ऑफ ऑडियंस. पर वही चीज़ अगर मैं एक छोटा सा गेम जैम कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर मैं रेड बुल को लाना चाह रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक रेड बुल वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट फिजिकल इवेंट, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ प्रॉबेबली 50 लोग आएंगे जो रेड बुल के का प्रमोशन देखेंगे, वर्सेस समथिंग ऑन द इंटरनेट जहाँ पे 1 लाख लोग देख रहे हैं. तो द चांसेस ऑफ यू क्रैकिंग अ डील इन द फर्स्ट सिनेरियो इज हाई. सो तुम्हें बेसिकली सामने वाले को सिर्फ ये कन्विंस करना है कि वर्किंग विद यू कैन हेल्प देम. तुम्हारी कॉन्वर्जेशन में ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें क्या फ़ायदा है, तुम्हारे कॉन्वर्जेशन में ये होनी चाहिए बात कि उस ब्रांड को क्या फ़ायदा है. देन यू विल बी एबल टू क्लोज द स्पॉन्सरशिप डील. प्रोसेस तो मैं क्या बताऊँ, यू जस्ट हैव टू मेक अ गुड डेक, प्रेजेंटेशन, एंड जस्ट स्टार्ट कोल्ड मेलिंग. जो भी लोग पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड है उनको टारगेट करो, लिंक्डइन पे मैसेज भेजो सीधा. हेलो सर, हाउ आर यू मिस्टर गेम राइडर? आई एम गुड. हाई, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर इन योर कंपनी? हमारी कंपनी में अभी फ़िलहाल 16 लोग हैं. ओजी अननोन. गौरव वगेला सर, can one make money by selling their game to other company, and how much money can you make by selling your game to a company? तुम्हारे गेम पे डिपेंड करता है, क्या तुम्हारा गेम पे डिपेंड करता है, उसके कैटेगरी पे डिपेंड करता है, उसके यूज ऑडियंस पे डिपेंड करता है. अगर तुमने गेम अभी तक रिलीज़ ही नहीं किया है तो तुम्हारे प्रोजेक्शंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये गेम कितने पैसे कमाएगा, कौन से कंट्री में कमाएगा. इन सब के प्रोजेक्शंस अगर तुम्हारे राइट है तो तुम सेल कर पाओगे किसी भी गेम को, बट तुम्हारा गेम उतना पावरफुल होना चाहिए. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर एक सिंपल गेम जैसे मॉन्यूमेंट वैली था, अगर उस लेवल का अगर तुम गेम बना रहे हो तो शायद पब्लिशर्स जो एप्पल पे पब्लिश करते हैं वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे.
अगर तुमने एक फ्रीमियम गेम बनाया जो एक फाइटर गेम है, कॉम्बैट गेम है और 2 प्लेयर कॉम्बैट गेम है, तो हो सकता है publishers in China, Japan might probably be interested in that kind of a game. पैसे कितने बना सकते हो? पैसे यूजुअली 2 पार्ट्स में बनते हैं जब तुम गेम सेल करते हो. अगर सी व्हेन यू सेल योर गेम बिफोर इट्स रिलीज्ड, ठीक है, nobody would be interested in only buying your game. वो लोग तुम्हारे गेम के साथ तुम्हारी पूरी एक्सपर्टीज लेंगे. इन द सेंस they just don't buy the game, they buy the rights to publish your game. So उसमें होगा क्या, अगर तुम 4 लोग हैं वो गेम बना रहे हो, तो वो लोग तुम्हें गेम का IP यूज़ करने के पैसे देंगे, कोड डेवलप करने के पैसे देंगे, और तुम दोनों मिलके एक प्लान डिसाइड करोगे कि इस दिन पे ये गेम रिलीज़ होगा. देन यू, बिकॉज तुम्हें अपफ्रंट पैसा मिला है पब्लिशर से, तुम घर जाके वापस उस पर काम करोगे एंड यू विल मेक श्योर दैट पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चेंजेस है वो हो रहे हैं उसके अंदर, एंड यू टुगेदर पब्लिश द गेम. बट पब्लिशिंग होता है पब्लिशर के हाथ में, उस कंपनी के हाथ में. सो वो पब्लिश करेंगे, और उसके बाद जैसे ही गेम पैसे बनाना चालू करता है, व्हेन द गेम इज़ लाइव, तो सबसे पहले पब्लिशर, जो पैसा तुमको दिया गया है पब्लिशर द्वारा, पहले पब्लिशर वो पैसा अपने जेब में डालेगा उतना. सो मान लीजिए अगर आपको किसी पब्लिशर ने 10 लाख रुपए दिए आपके गेम के लिए, तो पब्लिश होने के बाद पहले 10 लाख का अर्निंग पब्लिशर अपने पास रखेगा, और उसके बाद जो भी आपने रेवेन्यू शेयर परसेंटेज डिसाइड किया होगा उसके बेसिस पे आप दोनों को शेयर मिलेगा. तो अगर आपने 50-50% रेवेन्यू शेयर डील किया है, तो देन यू विल गेट 50% ऑफ व्हाट द रेवेन्यू इज, जो पैसा कट होने के बाद. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट. एक स्टैंडर्ड अगर मैं नंबर बोलूँ तो समवेयर बिटवीन $10,000 से लेके $300,000 तक भी मोबाइल गेम्स जाते हैं, बिकते हैं. बट अगेन, लाइक आई सेड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर गेम एंड योर विजन एंड प्रोजेक्शंस टुवर्ड योर गेम. अदरवाइज वो नहीं होगा. VFX वाला, हेलो दिनेश जिंगले. हाउ आर यू दिनेश? लॉन्ग टाइम. नरेश चौधरी, हेलो. थैंक यू सर फॉर क्लैरिफाइंग अबाउट द टॉपिक. नो वरीज, आई एम हियर टू हेल्प. गाइज, अगर तुमने लाइक बटन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर दो एक बार. अभी बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ, तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे एक टिपिकल एल्गोरिदम है जहाँ पे पूरा वापस ज़ीरो से उठाना पड़ेगा उसे. आई स्टार्टेड इट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसको रेगुलरली स्ट्रीम करूँगा. तो यूजुअली मैं इसी लेट नाइट्स ही करूँगा अभी, बिकॉज नाउ आई हैव इनफ बैंडविड्थ लेट नाइट कि मैं कर सकता हूँ. Are some publisher making money because some publisher ads placements are very hidden? Of course. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एड रेवेन्यू बनाने के लिए बनाए जाते हैं, और पब्लिशर्स को पता होता है कि इससे यूज़र इरिटेट होगा, बट उनका ऑब्जेक्टिव वही होता है कि 3 महीने तक इतना बम्बार्ड करेंगे एड्स की वो लोग अपना पैसा बना लेते हैं इन रिटर्न. सो स्ट्रैटेजीज है. emails, messages, क्या है ये? So some of my cousins' friends are trying to make a game with horror, jump scares and swords and magic. Is that even possible? It is possible. Everything is possible. There is no limit to your creativity. कर दो. I am learning game development using Unity in Action book. What are your thoughts? Unity in Action. मैंने सुना नहीं है इस बुक के बारे में. अगर मैं आज के डेट में भी प्रोग्रामिंग कर रहा होता यूनिटी पे तो शायद मैंने ये बुक सुनी होती, पर कई साल हो चुके हैं कि मैं एक्चुअली मशीन पे बैठ के गेम डेवलपमेंट नहीं करता. आई लुक एट द बिजनेस, आई मैनेज द बिजनेस. सो मेरा डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई इनपुट्स नहीं है. विजनरी क्राफ्ट्समैन सर
हाउ टू गेट इन द गेमिंग इंडस्ट्री। विजनरी क्राफ्ट्समैन एक मेरे चैनल पे वीडियो है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो 8-10 वीडियोज़ है उसमें से एक वीडियो है, हाउ टू गेट इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री, हाउ टू मेक अ करियर इन द गेमिंग इंडस्ट्री। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस में से सबसे पॉपुलर 8-10 वीडियोस में से एक वीडियो है वो। बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो रेलेवेंट है आज के डेट में भी। मैंने आई थिंक 3 साल पहले बनाया था वो वीडियो, पर आज भी उतना ही रेलेवेंट है, सो गो एंड चेक इट आउट। श्रेयांश ब्रो, इंडिया में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की जॉब्स नहीं मिल रही। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ऑनेस्टली इट इज़ डिफ़िकल्ट। गेमिंग इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के प्रोफाइल्स बहुत ही कम है। वन ऑफ द रीजंस इज कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट यूजुअली लोगों को लगते हैं बड़े स्केल के गेम्स के लिए, बीट मोबाइल, बीट पीसी, कंसोल। ऐसी कोई बात नहीं है कि पीसी एंड कंसोल के लिए ही सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट लगते हैं। अभी जो गेम्स आप देख रहे हो इंडिया में जो आ रहे हैं, मोबाइल गेम्स, जो बड़े बड़े गेम्स हैं, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट लगते हैं। बट द प्रॉब्लम इज नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग दीज बिग गेम्स एंड दैट इज़ वाई प्रोफाइल्स भी उतने कम हैं। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट इन जनरल हैज़ अ सुपर अमेजिंग स्कोप वर्ल्ड वाइड। आप अपने नॉर्मल सोशल हैंडल से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट आर्ट फॉर गेमिंग कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। कुछ ऐसे एग्जांपल्स नॉटी डॉग्स के साथ भी मैंने देखे, जहाँ पे कपल ऑफ फ्रेंड्स दैट आई नो, obviously not from India but outside India, they created fan arts for Last of Us, and surprisingly Naughty Dog even featuring their artwork, boosting their own social media and the artists Instagram profiles also, which in turn gave them a lot more opportunities. So मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्किल जो है वो आर्टिस्टिक है, and there is no limit to what you can do with concept art. Globally I think sitting at your home itself you can make a lot of money. Sir, can I get sponsorship from the game itself? For example, if it's a BGMI tournament, then is it possible? I don't think so. ये बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़े लेवल की, आई मीन दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशन जिसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। वन मैन कांट पुल इट। जो ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे स्काई स्पोर्ट्स है, नॉर्डविन है, they are the real, and there's a lot of legalities into even trying to do that. ऐसी जो कंपनीज है क्राफ्टन जैसी, सोनी, क्राफ्ट, ये सब कंपनीज में इतनी लंबी चौड़ी हायरार्की होती है कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। एंड देयर आर बिगर ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ये एफर्ट्स डाल के ये रिलेशनशिप्स बिल्ड की है इन लोगों के साथ। सो यू माइट हैव सीन स्काई स्पोर्ट्स डूइंग BGMI का टूर्नामेंट और सम अदर टूर्नामेंट, रियल क्रिकेट का टूर्नामेंट। ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज दे हैव बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स ओवर ईयर्स, by talking to them, by being in that circle. So से इमिडिएटली तुम उठ के BGMI को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम ट्राई तो ज़रूर कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, बट इट्स अ सुपर लॉन्ग शॉट। फाइन सर, तुम्ही कसं आहात? आई एम गुड दिनेश, थँक यू, perfectly fine. Visionary craft. Hi sir, how to get in the gaming industry? What qualifications need to be? Again, visionary, अगर तू चाहता है तो मैं अभी तेरे को लिंक ही दे देता हूँ। नहीं चाहता तू तो
इट्स अ वेरी गुड वीडियो एक्चुअली. मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया था वो वीडियो. And I've seen a lot of people benefiting from that particular video. So मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैंने ये चीज़ की, ये वीडियो बना के. विजनरी, दिस इज द लिंक. अरे यार, मैक वाली आदत हो गई मुझे. सॉरी गाइस, आई एम यूजिंग विंडोज मशीन, लेकिन मुझे कॉपी पेस्टिंग की आदत लग चुकी है मैक की, तो मैं कंट्रोल कमांड ढूंढ रहा था. एनीवे, विजनरी क्राफ्ट्समैन, मैंने ये लिंक डाली है, वो लिंक तुरंत जाके देख ले और मजे कर. कुलविंदर सिंह, हेलो श्रेयांश, मिल लो एक दूसरे से. हाउ डू स्टोरी पिक्स मेक मनी? गौरांग, स्टोरी पिक्स राइट नाउ इज प्री रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट अभी तक मोनेटाइज्ड नहीं है. देयर आर वेज यू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट्स. कुछ लोग होते हैं जो डे वन से मोनेटाइज करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पहले ही ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं. स्टोरी पिक्स बेसिकली ऑडियंस को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है अभी, एंड दैट्स व्हाई इट्स प्री रेवेन्यू. आई एम कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, टू व्हाट टू डू, आई हैव 8 months एक्सपीरियंस. श्रेयांश, इंस्टाग्राम अकाउंट बना, अपना काम डाल वहाँ पे, आर्ट स्टेशन पे काम डाल, and start talking to people on LinkedIn. Put out content on LinkedIn also. How much applicable is machine learning and deep learning in today's and future game development? Krishnanand Yadav, it's very much applicable, and बाहरी लेयर से वो समझ, मतलब people don't talk about it a lot, but it's been used widely across, and it's not just in the game development scenario but across the programming sectors. But this is something that is a very niche skill and understanding that people have on the topic. So yeah, I mean, to answer your question, yes, it is applicable at a much deeper level than we think it is. Jose, क्या है नाम, क्या है भाई तेरा? Hi sir, is it better to learn multiple game engines or just get really good at one for longevity in the industry? It is good to have knowledge about multiple engines. It's going to help you in long run for sure, but you obviously need to be really good at least one of these. But when you're focusing on that one particular engine, don't neglect the others. You need to have at least sound knowledge of at least 3-4 good engines. Should an Indian game dev try Roblox game development? You should. A lot of people from India are. VMPIY Tube. A lot of game developers in India are doing this, and I would say you should definitely try it. It's a great tool. It's a great sandbox tool, and people are experimenting in their own ways. There's something that even Garena has tried with I don't remember the name. There's something Go. It's similar to Roblox. इंडिया में 3D आर्टिस्ट की डिमांड बहुत है, बट 2D की बहुत लेस. वाई? See, a lot of game developers in India are making games with free tools, and
there are a lot of tools that give you good and good frameworks to create good content in 3D. पहले की तरह नहीं है जहाँ पे 3D में अगर तुम्हें कुछ बनाना होता तो you have to make this 3D models, then rig them, and then all that. So there are a lot of free tools that help you use the assets. I'm saying making a 3D game is way easier today compared to what it was earlier. I strongly believe that making a 2D game is difficult. Good 2D, game is difficult than creating a 3D game. So a lot of game developers, because it also gives a great visual quality in 3D, a good experience, a good immersive experience while you're playing in 3D. And that's the reason a lot of game developers are trying 3D. But to answer your question, simple answer is 10 में से 8 studios 3D में games बना रहे हैं, 2 2D में बना रहे हैं. So obviously 2D artist की requirement कम है. But when you are a 2D artist and you are in games, you should also focus or be very good at UI. उस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे तो it becomes like a big differentiator for you. Becomes like an added skill जो तुम दिखा सकते हो. Because every game requires the UI or the static screens, right? So even if it's 3D, it needs 2D UI into it. 99% of the times. There are many games like StoryPix. Isn't this a big challenge? And audio storytelling is also rising. There are games like StoryPix, but these are all games with Western audience and catering to Western audience. Also, all the stories that you see are unrelatable to the Indian audience. What we are doing with StoryPix is we are building a massive Indian audience with the stories that Indians understand, which are relatable to the people in India, in the tier 2, tier 3, tier 4 part of India. If you see the mass audience in India, they would not be comfortable playing choices or episode, mainly because the content is irrelevant. High school romance, early pregnancy, LGBTQ, these are foreign topics for the mass audience in India. And the second obstacle is the language barrier. ये games जो है वो सब English, Spanish, French ये languages में है, but we started with Hindi. We will be localizing into multiple other languages, but that is something that we are doing, which is a big differentiator, comparing it with the other games which are already there. Gaurang, can you tell us something about Mukti? Soon, very soon. Is the growth rate of game development industry dropping after the pandemic as people don't get time to play? But people are now used to. Obviously, see, it was a graph. So pandemic के पहले अगर वो graph यहाँ पे था, pandemic में यहाँ पे गया, and then after pandemic, when, like you rightly said, people don't have enough time to play, वो गिरा है. लेकिन वो गिरा हुआ जो पॉइंट है वो पहले जो था पैंडेमिक के पहले उससे कई ज़्यादा ऊपर है. So it went from this to this and then it has come to this. So good thing is now people are at least hooked to games. They are open to new games, experimenting with new games, and they
are playing games, which is a good thing for the industry. Can you share any insight on how much can we legally copy a game mechanic from another game? Honestly, nobody can stop you. There is no official patenting on the mechanics or the ideas of games. There are a lot of games which are similar mechanics, but you need to play it smartly as well. I mean, ऐसे millions of games है जो similar mechanics के है, लेकिन eventually जो voodoo के साथ voodoo और I don't remember the name which company it was, but उन लोगों में जो wood cutter वाला game का problem हुआ, they had to pay because it was copied frame by frame. So even if you copy the mechanics, you need to actually play it very smart, so that you don't fall into any of the legal problems. Hello Kushal, how are you? Vipla Singh, want to start an indie studio, how to hire employees? Can we get help from industry veterans like you for this? Vipla Singh, I'll just give you a heads up. There is a new course that I am putting out very soon. It's almost done. It's about starting your own game studio. How many people actually are interested in watching that is something that I'm keen to know, because मुझे इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे YouTube पे, मेरे Insta पे, that I decided to make a course so that a comprehensive set of videos अगर मैं available करूँ, people can just get that course and watch it whenever they want, because it's something that I feel is very important, and people want to know a lot of stuff about that. यही है विप्लॉ, यही हेल्प हो सकती है मेरे से, but obviously it's not going to be free. It will be charged on some on the efforts that I'm putting to create that video series. So I'll be putting it out very soon on my Graphy link, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो वो कोर्स को. I'm good. How are you? I'm good, Kushal. Thanks a lot for asking. How is work? How is work going? Guys, if you don't know, ज़्यादा लोग तो है नहीं, 10 लोग ही हैं, but I'll still update if you missed the update. I have moved into a new house. तो अगर तुम लोगों को हाउस टूर चाहिए तो प्लीज लेट मी नो. I would be more than happy to do that. Also, if you guys haven't yet followed me on Instagram, तो Instagram पे फॉलो करो यार. Instagram को फॉलो होने को मांगता है. अरे यार, ये मैकबुक की आदत हो गई है मुझे. गाइज, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़, मैंने अभी लिंक डाली, उसमें फॉलो करो. थैंक यू कुशल,
Thank you, Krishnanand. Thank you, Gaurang. I want to make an action platform, but since it will be my first game and limited money, thinking of making it a simple action RPG like Bastion Supergiant Games. What will you suggest? Vipla, I would just suggest a very simple solution to this. You want to make an action platformer? Make an action platformer. But you're saying because it's your first game and limited money, thinking of making. So basically, तुम्हारे पास it's your first game and you have limited money. You are diverting your vision. मैं suggestion simple दूंगा, इतना ही दूंगा कि if you want to make an action platformer, make an action platformer. But वो अपना second game बनाओ या third game बनाओ. उसके पहले एक दो ऐसे गेम्स बनाओ स्टार्ट टू एंड एंड पब्लिश देम टू लर्न all the things that you probably would go through, and that can help you build the dream game or that action platformer game that you're mentioning here. So do that, it will help you. Yeah. Okay, all right guys, 45 minutes up. वापस चाहता हूँ स्टार्ट कर चुका हूँ एक्चुअली, बट आई जस्ट मेक श्योर दैट आई डू दिस रेगुलरली. हफ्ते में एक या दो स्ट्रीम्स तो डेफिनेटली करूँगा, एंड देन द कंटेंट इज तो देयर ओनली. सो सी यू ऑल in the next live stream. Thank you for joining the stream. मज़ा आया बहुत टाइम के बाद. Stealth, hello. We are leaving. बंद हो रही है स्ट्रीम अभी. ऋतिक मिश्रा, हेलो. पहुंचा गया घर. Bye guys. See you in the next stream.